हमें Coulomb's law discussion करिचे Coulomb's law रे is a very simple and universal law. There is two charges, point charges q1 q2 when separated by certain distance r, then there would be a force of repulsion or force of attraction. As you know, force of repulsion when they are like charges, plus plus or minus minus, these are called like charges. Magnitude may be different, magnitude अलग type है. And when they are unlike charges, then there is a force of attraction. So let us consider for two positive charges q1 and q2 separated by a distance r. So this is force. So this force of repulsion and this force of repulsion both are equal and opposite. In the property of force, electric force, we will discuss this thing. So this force from Coulomb's law we have already discussed, that is equal to some constant we will use. That constant is beta into q1 q2 divided by beta divided by r square. देखो मु k बदल रे केतोडी बुक रे k थाए constant हमें beta नबा, where beta is electrostatic constant. This electrostatic constant beta will be now more important because this will decide what would be the force, what would be the dependence of force. Beta, this electrostatic constant now I can write out, that is 1 by 4 pi epsilon naught, another factor epsilon r. This epsilon naught is called permittivity of free space, and epsilon r is called relative permittivity. देखो हमें डिसाइड कले प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करछ आ पे डिपेंड करछ, किंतु पर्पस रो देखाला ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो डिपेंड्स इन चार्ज गुडा को मीडियम रछथि. दिस इज अ मीडियम. दिस मीडियम रो किछटा प्रॉपर्टी अछि, दैट इज परमिसिबल प्रॉपर्टी, परमिटिविटी बोली कहते. सो जदि ए परमिटिविटी ए मीडियम रो किछि प्रॉपर्टी ऊपर डिपेंड करछ, मीडियम रो प्रॉपर्टी चेंज हो जदि मीडियम रो हमें नबा एयर नबा or oil gote naba or water naba or glass naba, depending on the nature of the medium it is a beta constant ta batan change is. This epsilon r, epsilon 0 is actually permittivity of free space. It is in experimental it is found to be 8.85 into 10 power minus 12 farad per meter. Mu every ta tum koibi f is for farad per meter. So epsilon r is relative permittivity. R value जदि ये medium टा जदि free space तो 1 for free space. Free space माने vacuum ପାଇଁ 1 हबो. It is supposed to be 1.00008 approximately 0 for air. It is 5 for any glass. It is found to be 81 for water. It is infinite epsilon for metal. But conductor. So epsilon of value change हो गया, automatic beta value change हो जाए. So this all rotation are taken at the beta electrostatic constant एवढा न्यायला in terms of in SI system न्यायला. कारण तो CHSE system रे वाला charge रो unit अलग है, distance of रो unit अलग है, so beta रो न्या value मतलब change है. That we will discuss each and every one. So Coulomb's law को हमें डिस्कशन कर परिवा in SI system, in CHSE system. तो in SI system असला कोना Coulomb's law जे हमें force हवा, force न्यूटन आसीबा, total is 9 into 10 power 9 by k because it is beta q1 q2 by r square. 1 by 4 pi epsilon naught into k use करथले, beta is equal to.
So 1 by 4 pi, 4 pi रो वैल्यू यूज करियो 8.85 into 10 to the minus 12 SI unit into k रो वैल्यू यूज करियो ये सबुडा यूज कला परे ये आसो 9 into 10 to the 9 by k. So बीटा बदला में एटा यूज करियो. So SI system एटा फोर्स आसो न्यूटन रे, force is Newton, charges are in Coulomb and distance is in meter. So what I SI use. But sometimes तुम जदि चार्ज गुडा को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU unit is a CHSE unit देतो स्टैट कूलम देतो कूलम ना दे स्टैट कूलम देतो डायरेक्ट तमे आनि परिबो. So in CHSE system if Q1 and Q2 are in start coulomb is 1 by 3 into 10 power 9 coulomb. मन पके दोची start coulomb. This start coulomb देची and R is in centimeter. Then force in dyne, force will be in dyne. सेटल तुम यूज करिवो द कांस्टेंट 9 into 10 to the 9 यूज करिवो नि 1 by 4 pi epsilon 0 यूज करिवो 1 by k into q1 q2 divided by r square. Then only it will be valid. CGS रे कोन बा SI unit रे कोन. For example for dita charge अछि q1 that is your 20 start coulomb ESU अछि out of 10 USU. Both are in 2 meter separation. Now question is, what is the force between them? Force keta by electrostatic force keta between them. So हमें CGS रे बाहर कर परिया. CGS रे हम बाहर करबी force electrostatic force I can use 1 by k only q1 q2 by r square, where q1 q2 are in stat coulomb. That is 10 ESU directly, 20 ESU, 10 ESU divided by r ta centimeter ho. So 2 meter is how much centimeter? That is 200 centimeter or square. And k is here found to be direct. K deithibo, let us suppose this is in a medium of 5. Dielectric constant is equal to 5. Glass 5 I can use. Jaha asbo sera nischay dyne ho. Tom koichi जेतले तुम CHS रे यूज करियो स्टार्ट कूलम यूज करियो सेंटीमीटर यूज करियो फोर्स विल बी इन डाइन. सो टोटल विल बी 5 to 40 divided by 4 into 10 to the power 4, that is coming 10 to the power minus 3 times. So this is answer na force ta etik dyne asu. Jodi jone koibo nai mu SI use kari, yes SI use kari paribo force, the net force will be in Newton, but very carefully तब 1 by 4 pi epsilon 0 that is equal to 9 into 10 to the 9 use करियो पुरो into k q1 q2 divided by r square use करियो 9 into 10 to the 9 k is 5 q1 देछि 20 ESU ताको हमें कूलम करियो पुरो कूलम केले 30 into 10 because 1 ESU is 1 divided by 3 into 10 to the 9 कूलम. So 20 ESU is 20 into 3 into 1. Similarly, another is 10, 3 into 10 to the power 9 coulomb divided by direct in 2 meter square. So 3, 3, 9, 10 to the 9 मोटे कटियोला 4, 4, 4, 2, 40, 40 अच्छी. So 40 divided by 4 into 10 to the power 9, that is 10 to the power minus 8. But what it should be Newton. This much Newton. अच्छा इटे डाइन रस हमने जे डाइन रे कन्वर्ट करिया 10 to the minus 8 into 1 Newton is 10 to the 5 डाइन, so 10 to the minus 3 डाइन. So same answer. ये आंसर जहाँ असला है आंसर अकेला. तो तमे SI यूनिट रे करो बस CHS रे सॉल्व करो. The final answer will not have any difference. But initially them put कलाडू को bitter value, constant value कौन use करियो, that you should be very careful. कूलम और मीटर यूज करछो माने तबे 9 into 10 to the 9 by k यूज करियो. जदि स्टार्ट कूलम रे यूज करछो 1 by k 9 into 10 to the 9 नबनी. फाइनल आंसर डाइन रहबो. दिस विल बी फाइनल न्यूटन. तब कन्वर्ट करिया गोछ माने टाइम रे कन्वर्ट करियो. ओके कम टू द पॉइंट.
Then come to units of beta, electrostatic constant, epsilon 0, epsilon r or k. What is this? This is electrostatic constant. What is this? That is permittivity, free space, which is supposed to be standard. Then this is relative permittivity. And another one is epsilon, that is epsilon 0 into epsilon r or k into k. That is absolute permittivity of the medium. Permittivity. देखो এটা রিলেটিভ সহিত permittivity of free space বা স্ট্যান্ডার্ড যদি মল্টিপ্লাই হবে তবে অ্যাবসলিউট হবে, nothing wrong. So first come beta. Beta is definitely, हम देखो जो force is equal to beta into that is coming q1 q2 divided by r square. So beta लिख पारिए हमें f into r square divided by q1 q2. डायमेंशन में ऐड करियो. फर्स्ट हमें यूनिट यदि यूज करिया ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर. कूलम्ब बाय मशीन है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर. Okay? The question will be asked, what are the dimensions of dimensional formula of electrostatic constant then absolute permittivity of the medium and relative permittivity of the medium. Very simple solution. So हम जानते हैं force is equal to beta into q1 q2 by r square. हम जानते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला बाहर करिया केमती गोटे वैलिड इक्वेशन नबा. वैलिड इक्वेशन जोटा नॉन क्वांटिटी f is known, beta मु जानिया दरकार. beta is equal to f into r square by q1 q2. डायमेंशनल फॉर्मूला ही यूनिट में आउचे तो डायमेंशनल फॉर्मूला और सहज हो. फोर्स में हमें ml t minus 2 यूज करियो. दिस में l2 यूज करियो. चार्जेस इज कूलम्ब स्क्वायर. व्हाट इज चार्ज? हम देखिबा चार्ज जदी हमें यूज करिया चार्ज बाय टाइम इज इक्वल टू करंट, बिकॉज़ करंट हाउस फंडामेंटल यूनिट रे करंट को इंपोर्टेंस दिया जाए. करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी. तनो चार्ज को आनी होले करंट इनटू टाइम रे मल्टीप्लाई करिया पड़ियो. सो चार्ज दीटा अछि तो करंट इनटू टाइम रो स्क्वायर. सो फाइनली वी विल फाइंड m L213 t minus 2 epodato minus 2 0 minus 4 and current square means ampere minus 2. This is the dimensional formula of beta. See clearly. And what is the dimensional formula of absolute permittivity? हमें जानी चाहिए absolute permittivity epsilon is 1 by beta reciprocal. As usual use कर दी तो 1 by use कर ले m to power minus 1 l to power minus 3 reciprocal कर दो t to power 4 a2. This is simple plus. What is the dimensional formula of epsilon r? Epsilon r is a ratio, so ratio is having no dimension. So m to power 0 l to power 0 t to power 0. That you can do. Question M thiba, find a relation between Coulomb and start Coulomb. Coulomb and start Coulomb. 1 Coulomb is how much start Coulomb? So, solution करियो. Let 1 Coulomb is found to be x start Coulomb. The x and how to get?
वेरी सिंपल हमें एसआई और सीजीएस रे डिसाइड करियो जदि हमें एसआई रे डिसाइड करछे दीटा चार्ज q1 q2 माने करो 1 कूलम एट अछि इट बी 1 कूलम अछि and their distance of separation होछि 1 मीटर तो जदि मु एसआई रे कहबी फोर्स ता डेफिनेटली आसबो केते 9 into 10 power 9 divided by k. K is supposed to be any medium. K nija into 1 coulomb into 1 coulomb divided by 1 the square. जो coulomb का यूज करिया ये सब आसो कोन इन न्यूटन. So आसला 9 into 10 power 9 by k न्यूटन. Very simple. अच्छा एडा मुझे दी सीजीएस लिखी सीजीएस रे जदि लिखबी एज यूजुअल हम जानि सीजीएस रे यूज करले फोर्स यूज करिया किंतु फार्मूला रे कोन यूज करिया 1 by k यूज करिया q1 q2 बदले 1 कूलम बदले हम केते x स्टार्ट कूलम एटा x स्टार्ट कूलम कारण 1 कूलम इज हाउ मच स्टार्ट कूलम जेतला हम चार्ज q1 q2 यूज करिया स्टार्ट कूलम में यूज करिया x into x by distance 1 मीटर तो सेंटीमीटर कले 100 रो स्क्वायर यूज करिया सो आसो कोन x स्क्वायर डिवाइड बाय k into 10 to power 4 but in time बोला देखो यदि 1 कूलम let us suppose I am taking तो ये 1 by मीटर यदि 1 ने 1 स्क्वायर ने इति करबी जदि मु सीजीएस यूज करबी मीटर वैल्यू टा 1 by k नेबी किंतु चार्ज नेला को 1 कूलम बदले x स्टार्ट कूलम नेबी x स्टार्ट कूलम नेबी दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर नेबी जा आसो टाइम सो ए दीटा इक्वेशन रू हमें श्योर है गले निश्चय आर वैल्यू जहा हेतिबो आर वैल्यू से आइ दैट मींस हम आ टिके प्रोसीड कर दे परिया मेटो दिबे दोचे दैट मींस 9 into 10 power 9 divided by k newton must be equal to x square by eta newton k into 10 power 4 time k getting cancelled मु एक तो सब जगह न्यूटन करी सबुडा टाइम करी लेट अस सबुडा टाइम करी 10 power 9 into 10 power 5 टाइम करी इज इक्वल टू x स्क्वायर by 10 power 4 करी डाइन करी तो फटा डाइन हे वाला डाइन केतला हला न्यूटन नु जले मु 10 power 5 रे मल्टीप्लाई करी सेतले जे डाइन हला अच्छा एपटे डाइन अछि तो डाइन यूनिट गेटिंग कैंसल सो जिंदे असला x स्क्वायर that implies 9 into 10 to power 9 into 10 to power 9 देखो मल्टीप्लाई करो so x is coming square root of 9 into 10 to power 9 into 10 to power 9 that is coming 3 into 10 to power 9 तो x रो वैल्यू एति आसला that means first हमें कंक्लूजन पाई गले 1 कूलम इज इक्वल टू x स्टार्ट कूलम कहतले so x बदला में यूज करिया 3 into 10 to power 9 स्टार्ट कूलम. So this is the proof. This is the relation. 1 coulomb is equal to 3 into 10 power 9 start coulomb, or 1 start coulomb is equal to 1 by 3 into 10 power 9 start coulomb. Then the important concept is how you use Coulomb's law in vector form, or Coulomb's law in vector form. देखो हमें जो यूज करथिले फोर्स टू चार्जेस q1 q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r हमें होतले तेनु सिंपली हमें कहतले फोर्स इज इक्वल टू बीटा कांस्टेंट q1 q2 ऐसा ही हो कि सीजीएस हो अकॉर्डिंगली हमें चेंज करथला किंतु एटा स्केलर फॉर्म ना एटा वेक्टर ना हम वेक्टर डायरेक्शन जणा पड़नी तो वेक्टर रिलेशन फोर्स इज अ वेक्टर डेफिनेटली r इज पोजीशन इज आल्सो वेक्टर q1 q2 आर स्केलर बीटा इज स्केलर ता तो ए दीटा वेक्टर ऊपर डिपेंड करिवो फोर्स को केमि हमें डायरेक्शन दबा हम जानछे जदी दीटा लाइक चार्ज हेतो ये q2 q1 ऊपर गोटा फोर्स पकेबो तो आकु तला हमें वेक्टर फॉर्म लिखिबा हम लिखिबा 1 ऊपर 2 पड़ला तो वेक्टर तो एम दबा फोर्स वेक्टर ऑन 1 ड्यू टू 2 सिंधे 1 दा 2 ऊपर फोर्स दला तो एटा हम लिखिबा फोर्स 2 ऑन 1 ड्यू टू 1 एम लिख पे सो वेक्टर फॉर्म लिखला बेलो को हमको केयरफुल हो पड़ो ठीक है केमते हमें साइन दबा यूज करिया एंड
ए जो डिस्टेंस रहला ए डिस्टेंस को हमें दीटा वे लिख परिया जदी पोजीशन वेक्टर टा एटु स्टार्ट करबा तबे हमें तो ना दबा देखो फोर्स वेक्टर जदी हमें कहबी 1 2 पर केते वेक्टर लिखबी केते बीटा इज अ कांस्टेंट चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी दिस चार्ज इज स्केलर डिवाइड बाय मतलब लिखा पड़ो r बट r इज अ वेक्टर क्वांटिटी बो लिखिए केमदी वेक्टर तो डिवाइड करी होनी वेक्टर को केबे डिवाइड करी होनी टू वेक्टर्स आर एडेड टू वेक्टर्स आर subtracted two vectors are multiplied but the vector cannot be divided so एडो मु लिखबी केम एडो निश्चय मु r स्क्वायर लिखबी किंतु आ सहित मु sin देबी आ तो लिखि केमदी एडो r स्क्वायर लिख देली ता सहित एई फोर्स टा एपड को आसीला तो तार डायरेक्शन जणैला फोर्स और डायरेक्शन एपड जणैला त एडो मु लिखबी r from 2 to 1 so this is the unit vector be sure देखो unit vector केम लगा दियो एटा होची 1 एटा होची 2 सो एई पटे जो डायरेक्शन आसीला दैट पोजीशन को हम लिखा r21 यूनिट वेक्टर दिस यूनिट वेक्टर कैप दिया से नेमी जति मो डायरेक्शन लिखबी दिस इज द यूनिट वेक्टर का कहते यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट बट डायरेक्शन इज दैट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर सो r21 मो लिख परी केमदी r21 मो नेक्स्ट स्टेप लिख परिबे q1 q2 r तक तो स्केलर फॉर्म में लिखली r21 रो लिख देबे r21 वेक्टर पूरा डिवाइड बाय r21 रो मैग्नीट्यूड अरे एनी यूनिट वेक्टर एक के इज इक्वल व्हाट a वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड तो सिमिलरली ए डायरेक्शन रे r और प्रति यूनिट वेक्टर को उडा केते हितो हम यूनिट वेक्टर दरकार कारण 1 यूनिट रे मल्टीप्लाई करले आर वैल्यू चेंज होबनी तो मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हवा दरकार किंतु डायरेक्शन ए डायरेक्शन आछे दरकार f1 2 तो हम कोन करबी टोटल वेक्टर पोजीशन वेक्टर दिस इज और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को तार मैग्नीट्यूड रे डिवाइड करी तो आसो कोन बीटा इनटू q1 q2 बाय r स्क्वायर आउट ये लिखले दिस इज r21 यदि मु वेक्टर लिखबी डिवाइड बाय 8 रो मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट r r21 मैग्नीट्यूड इज r so that is coming beta q1 q2 by rq into r21 vector is equal to f1 to vector देखो f कलाडू 1 2 लिखुची r21 कलाडू r21 लिखुची इंपोर्टेंट तो एइटे तमे जानिया पडियो ठीके साइन कोन यूज करिया तो दिस इज ए एक्सप्लेनेशन तो हमें कोन साइन फर्स्ट यूज करिया तो बीटा चार्ज सो हम नियत लिखला बेला को बीटा चार्ज finally we can conclude this q1 q2 एक जो फोर्स असला तो उठा दबा f on 1 due to 2 but a distance से जो यूनिट वेक्टर असला this is from 2 to 1 देखो this is unit vector and total displacement is ये जो displacement total असला that is r21 vector so r21 vector का हमें r बोली नाम दी पड़ेगी इससे स्केलर में हमें r नाम f12 but the displacement of 1 from 2 is written as displacement of 1 from 2 is r21 2 ru 1 plus तो r21 तो এটা আমরা নাম দেই পারে এটা আমরা ফ্যাক্টর ফর্ম করতে পারি f12 vector is equal to beta into q1 q2 को डिवाइड बाय तब रहला कोन r cube যদি রইলা এটা রইব r21 vector similarly opposite lecture this is what f2 due to 1 but एपर जो यूनिट वेक्टर असला r1 और 2 असला एपर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हला तार मैग्नीट्यूड r हला सो इटा हम लिख परिया f on 2 due to 1 is beta into q1 q2 divide by r cube the cube पडची तेणु एटा r12 है this two representation is very important एटा हम देख परिया तो लिख परिया तमे r21 करो f12 is force on 1 q1 due to q2 similarly r21 is displacement of 1 from q2 similarly f21 force on
2 due to Q1, but R12 is displacement of 2 from 1. देखो 7 से तो करिए एटे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जानला परे इट इज इंपोर्टेंट आपको हमें यूनिट वेक्टर लिखिबार अछि बीटा इनटू q1 q2 बाय यूनिट वेक्टर लिखला आस्ते लिखियो कारण एटा r ता यार वैल्यू r कटि जीवो तमे यूनिट वेक्टर लिखला r कैप टू 1 सपोज एडो कि यूनिट वेक्टर लिखिबा बीटा इनटू q1 q2 बाय r स्क्वायर तो r12 these are unit vector representation केमदी displacement vector representation very important question दियो prove that electrostatic force between two charges obey Newton's third law of motion. Newton's third law माने प्रूफ कर करियो आराम से प्रूफ करियो बट वेक्टर नोटेशन जाने दिले तो प्रूफ करियो पे इजी हो किम लिखियो let two charges q1 q2 are there. So if the distance is r, so we can represent force on one due to 2. How it can be represented? That is beta into q1 q2 divided by r cube formula लिखली into r12 not 2 1 from 2 to 1. देखो ये वेक्टर दिले ये वेक्टर दिले कारण तले वेक्टर में देई परिबे ये सब गुडा स्केलर है. Similarly and force on 2 due to 1 is beta into q1 q2 by r cube into r1 so it 2 लिखले म 1 को लिखस बर्तन लिख परिया में for magnitude जे देखिबा कंपेयर करियो f12 रा magnitude is equal to beta into q1 q2 by r2 into r magnitude r पटियाला. So beta into q1 q2 divided by r square. And f21 ra magnitude beta into q1 q2 divided by r cube into this much magnitude. This magnitude again r again beta into q1 q2 by r square. That means f12 vector is equal to f21 vector. So Newton's third law re the forces are equal and opposite will हम prove करियो equal तो निश्चय हला opposite will हम कैन prove करियो again magnitude है हला and for direction जो दरकार वीडियो पॉज करें you can see for direction by simple देखो f12 force on 1 due to 2 is equal to beta into q1 q2 r cube r21 नहीं अच्छा this vector is r21 vector whose empty is negative of r12 vector so mu 2 बदले 1 2 पके तो f12 vector beta into q1 q2 by r cube minus of r1 so minus आगे लिखते भी q1 q2 by r cube into r1 and that is minus of f21. So, f12 vector is equal to minus of f21. So, Newton's third law is justified. Every action has equal and opposite reaction. That means Newton's third law is f12 vector is equal to negative of f21 vector. That means Newton's third law of motion is justified. Every action has equal and opposite reaction.
ये जदि एक्शन हला जको ये तको रिएक्शन कला एंड एक्शन रिएक्शन act on same body na different body रे act करा एक्शन जदि एटा नबा एटा रिएक्शन एटा जदि एक्शन नबा एटा नबा रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन हला जस्टिफाइड ओके So we can discuss some important properties of electric force. Electric force means the force which is developed due to Coulomb's law. तो दीटा चार्ज जतले रहिला सेतले सेमान भितर गोटे फोर्स डेवलप हला ये तको फोर्स ये भी तो फोर्स देला फोर्स भी attractive may be repulsive. Electric force is obtained experimentally, so it is a basic law. It is not by logical approach, logical derivation. It is completely a experimental derivation. Law is strictly applicable for point charges. When we take the charges, that should be point. Means the extension of object dimension extend heitwa, and the displacement vector extension of object is very small as compared to the position vector. एमने नहीं होती extension of object मानो इटा बहुत extension हबो out object एट रहबो जदि एटा पूरा object हबो आ पाई वैलिड नै देखो extension of object माने object एटा अति बड़ एक्सटेंड है जे पर्यंत मु जदि एज्यूम करबी बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आउट ऊपर जो इंटरेक्शन पर दिस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू दिस देन इट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट्स एक्सटेंशन इज नॉट so far or it is negligible as compared to the position of any other object अन्य जे कोन सब्जेक्ट और पोजीशन रे आर एक्सटेंशन हेन होते जते बेले तब कहि हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट सो इट इज अ पॉइंट and जदि चार्ज अछि it is also a point charge. Coulomb's law is a mutual force of interaction. Obviously हमें proof कले action has equal and opposite reaction, hence it is a mutual force of interaction. Coulomb's force is a conservative in nature. Coulomb's force is conservative in nature. What do you mean by conservative in nature? Work power energy 11th रे पढ़ला वाला जानछे the force is said to be conservative if work done by it does not depend on the path followed. Means जदि गुटे चार्ज को किसी गुटे फोर्स डेवलप होची ओके ए फोर्स जो वर्क वन गुटे चार्ज मानो किसी डिस्टेंस मूव करबा ए पॉइंट रो ए पॉइंट जदि ए फोर्स जो किसी चार्ज मूव होची so work done on this force is independent of path. ए चार्ज को तुम एमती मूव करो बा एमती मूव करो बा सीधा मूव करो तीनटी जगह पाथ रे वर्क डन सेम रहइबो. आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज कंजर्वेटिव इन नेचर. फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. मींस जदि गोटे चार्ज अछि ता जो गोटे फोर्स डेवलप होला ता अर्थ अन्य जे कोन चार्ज रखिबा और चार्ज को डिस्प्लेस करिया गोटे पॉइंट रो गोटे पॉइंट किछ वर्क करियो पड़िबो. से वर्क दा पाथ पर डिपेंड केमिति तमे मूव करछो ता पर डिपेंड करियोनी को टू पॉइंट को तमे मूव करछो ता पर डिपेंड करियो. सो दिस इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर. मींस वर्क डन बाय दिस फोर्स दैट मींस वर्क डन by Coulomb's force is independent of path followed by the charge moves under it. आउ किछु रे चार्ज आ अंडर ए पाथ जदि फोर्स अंडर ए मूव करूची तापर जो वर्क हबो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. तुम केमिति मूव करो छ करो वर्क तो सेम रहबो दीटा पॉइंट भीतर. वेरी इंपोर्टेंट. Coulomb's force is a central force. Means it is along the line joining the two charges. Joining two charges means जदि दीटा चार्ज नबा q1 and q2 तो आर लाइन जॉइनिंग रे ही फोर्स एक्टिंग करियो. Only a direction of force. This is the line. So it is said to central. किबे एमति हबनी ए एमति फोर्स पुट करियो सब बळे along the एमति ले या आसीला हबनी. Never it is possible. एटा पॉसिबल नै. It is always along the line joining. So it is said to be central force. अच्छा Coulomb's force obeys inverse square law because हम जानि जे फोर्स ता inverse square law. Conservative nature जोडा हेतिबो साधारणतः inverse square law follow करियो. This is also true. गुडा मन रखिबो ए पॉइंट गुडा मन रखि
These are the properties. 2 marks property ase, so it is important to keep in memory. Coulomb's force is a large round and short range force. बहुत बड़ा डिस्टेंस में मध्य यूजफुल होगा दीटा चार्ज किलोमीटर डिफरेंस रे मध्य हम चार्ज दीटा रे ऊपर इंटरेक्शन करि परिबा शॉर्ट रेंज रे मध्य हेइ परिबा. So the Coulomb force can be used for long range as well as short range. हाँ जेतबे 10 to power -10 -15 पाखा भी जदि आस जदि दीटा चार्ज भितरे तबे न्यूक्लियर फोर्स डेवलप हो सेते बेले वायरलेस नहीं जो वेरी शॉर्ट रेंज जदि हमें फॉर्मी जो फेम्टोमीटर कहंती 10 to -15 मीटर जदि दीटा चार्ज भितर रहइबो सेते बेले एक्सेप्शनली न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करियो दीटा चार्ज भितर. दैट इज व्हाई 10 to -15 पर हम जे देखिबा सब फॉर वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस दिस फोर्स कैन एक्ट मींस दीटा चार्ज को हमें लॉन्ग रेंज रखले मध्ये फोर्स एक्सपीरियंस कर परिबा शॉर्ट रेंज मध्ये एक्सपीरियंस कर परिबा किंतु न्यूक्लियर रेंज जे रखिबा देन देयर इज समथिंग न्यूक्लियर डिस्टेंस विल कम इनटू न्यूक्लियर फोर्स विल कम इनटू एक्ट and that is a strong force which violates to the electrostatic force. So think on rakhiba this is about your properties of force. Okay.